Good morning, dear students. Today we are going to start the first chapter of Geography of Class 8, which is Chapter 1 Resources. Means we are going to discuss about all the resources and what are resources and what are the need of resources in our life. So let's start chapter with the definition of resources. Okay, on the earth our earth is a unique planet, as we all know that our earth is a unique planet in the sense that it has a favorable environment for growth and sustenance of organism. Man has several basic needs which he satisfied from nature. मतलब जो हमारा अर्थ है वो एक ऐसा प्लानट है जहाँ लाइफ सस्टेनेबल है, जहाँ हम लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं. तो सबसे पहले हम इस रिसोर्स चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि दैट व्हाट अर्थ कंसिस्ट ऑफ. अर्थ पे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉइल है, रिवर है, प्लांट है, एनिमल है, बहुत से वेरियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू द मैन. और यही एलिमेंट जो हैं वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं. इनफैक्ट जो मटेरियल्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं अर्थ पार्ट में और एक ह्यूमन नीड को, द मटेरियल्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. Those features of the environment which are considered to be capable of serving man's need and which are given utility by capabilities and wants of man. However, it should be made clear that a thing, object or element becomes a resource only when it has capability of fulfill man's needs or perform the function which benefits man. Thus, man himself is a resource perhaps superior to all other resources as only man can utilize all other resources. जो चीज़ें इन सिंपल लैंग्वेज, जो भी चीज़ें मैन की नीड्स को सेटिस्फाई करें और जो चीज़ें मैन यूटिलाइज कर पाए, वॉट एवर थिंग्स satisfy the needs of human being and whatever things the man can utilize, they are called as resources or they can be termed as resources. Now we are going to discuss about the natural resources. That what are natural resources? इस term से ही हमको पता चल रहा है natural resource में whatever resources we have got from the nature, those are called natural resources. We need हम लोग air breathe के लिए यूज़ करते हैं, water to drink, soil to grow crops, all these things we use. And same way जो sunshine होता है, forest होता है, rock होता है, mineral होता है, वो सब useful होता है human beings के लिए. As these gifts of nature satisfy human wants, they are known as natural resources. ये जितने गिफ्ट्स हैं नेचर के वो सब ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं. तो जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्सेज होते हैं. बट अगर वी आर गेटिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर, इट मीन्स दैट दे आर natural resources which are satisfying the human needs. But we must understand that they acquire value as a resource only when people start using them. लेकिन अब तक किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स नहीं कहा जा सकता जब तक लोग उसको यूज ना करें. When the people start using any of the thing, then that can be termed as resource. When people in olden days, waterfalls had no real use to until we started harnessing them for generation of electricity. ओल्ड डेज में जो वाटरफॉल्स होते थे उनका कोई यूज़ नहीं होता था, तब तक यूज़ नहीं हुआ, तब तक वो रिसोर्सेज नहीं हुए जब तक हमने उसको हार्नेस नहीं किया. किसके लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गिफ्ट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ मैनकाइंड. और जो गिफ्ट ऑफ नेचर है, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, वो तभी रिसोर्सेज बनते हैं जब ह्यूमन काइंड जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उनकी नीड जब वो होते हैं तभी दे कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. इन द प्रिमिटिव डेज द नीड्स ऑफ द पीपल वर लिमिटेड टू देयर सर्वाइवल ओनली. Therefore, not much resource development took place in those times. As human beings made advancement in civilization, they started using all the gifts of nature not only for survival but for the comfort and luxurious too. With the advancement in science and technology, almost everything available on the surface of the earth has become a resource. पहले लोग क्या करते थे? They don't know that how to use the things of the nature or how to use the things of whatever they have got, artificial or natural. They don't know how to use these things. But when the civilization had happened, civilization हुआ human beings का, science और technology आगे बढ़ी, then we have started almost जो resources हैं
हर चीज़ अवेलेबल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वी आर यूजिंग देम एज द रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज से ही पैसा कमाते हैं. दे क्रिएट वेल्थ एंड मेक देयर लिव्स प्रॉस्पेरस. और वो प्रॉस्पेरस हो जाते हैं, धनी बन जाते हैं. दे बिकम्स रिच. विद आवर टेक्निकल नो हाउ वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. हम कैसे रिसोर्सेज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी प्रोड्यूस फाइन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन एंड वी मैन्युफैक्चर फाइन पेपर फ्रॉम वुड एंड पल्प. हम कॉटन से फाइन क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं और वुड और पल्प से फाइन पेपर प्रोड्यूस करते हैं. इन दिस वे वी कन्वर्ट नेचुरल, और इसी वे में हम नेचुरल रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक आर्टिफिशियल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं. और रिसोर्स किस में कन्वर्ट होता है, वेल्थ में कन्वर्ट होता है. और इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग की हेल्प से हम पैसा कमाते हैं. वी अर्न मनी. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम बात करते हैं तो पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, देन है अबायोटिक रिसोर्सेज. तो बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज किस बेसिस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन रिसोर्सेज आर बायोटिक एंड अबायोटिक. अब पहले बायोटिक पढ़ते हैं. ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, ऑल दोज रिसोर्सेज जो हमको लिविंग बीइंग्स से मिलता है, दोज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. जो भी हम लिविंग बीइंग्स से प्राप्त करें, जो भी लिविंग बीइंग्स से वी गेट दोज वॉट एवर थिंग्स फ्रॉम लिविंग बीइंग, वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फॉरेस्ट, फिश, एनिमल्स बायोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो जनरेटिंग कैपेबल होते हैं अपने आप को जनरेट करने के लिए. इन दिस सेंस ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और इस वजह से बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं. नेक्स्ट इज अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे बिलोंग टू नॉन लिविंग. बायोटिक लिविंग से बिलोंग करता है और अबायोटिक नॉन लिविंग से. और जनरली अर्थ क्रस्ट के अंदर फाउंड होता है, जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. In fact, the minerals like nickel, cobalt, and manganese are continuously being formed in nodules in the ocean floor, but they take a much longer period of time to be renewed. In this sense, we say that they are non-renewable, but some other abiotic resources are renewable, like air, water, and land. Air, water और land ये सब क्या है, ये सब अबायोटिक तो है, बट दे आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज. बट जितने मिनरल्स हैं जैसे निकल, कोबाल्ट, ये सब जितने, इनको अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत टाइम लगता है इनका प्रोडक्शन होने में, इनको प्रोड्यूस होने में. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्स. नीड क्या है, दैट इफ रिसोर्सेज विल नॉट बी प्रेजेंट देन व्हाट, हाउ वी विल अर्न आवर लिवलीहुड. बिकॉज रिसोर्सेज होंगी तभी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा. एंड वी अर्न लाइवलीहुड, वी अर्न मनी एंड विल बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरस. That is why resources are very important and they are need of each and every human being. Now we'll discuss about renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources वो होते हैं जो एक बार यूज हो जाए and after that we can renew it. हम फिर से उसको renew कर सकें. Those are called renewable resources. और non-renewable resources वो होते हैं जिसको हम renew ना कर पाएँ, जिसका renovation ना कर पाएँ. Those are called नॉन-रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. लेकिन नॉन रिन्यूएबल जैसा कि मैंने बताया, कोल, पेट्रोलियम, ये और इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एवरेज लाइफ स्पैन की वजह से दे कांट बी रिन्यूड. सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास. Now we will discuss the next topic, that is classification of resources, in our next class. See you all in the next class. Till then, goodbye, take care, stay home, stay safe, and thank you so much.